Okay. Good afternoon, everyone. So today we start a very important topic. Today we start a very important topic: transformer. We start with the topic transformer. Now, first of all, what is transformer? Transformer is a device by using which, especially we can transform, or you can say the change AC voltage. Means if you have input voltage, with respect to input voltage, you can change the output voltage. That means if you want to see the pattern, if we start with the very high voltage line, that is called the HVDC, high voltage transmission, HVT, high voltage transmission, वो बड़ा जो टावर तुम्हें दिखता है, तो इसमें कितना वोल्टेज होता है? 132 kV। अब वो 132 kV सबसे पहले क्या होता है, वो स्टेशन में, ये जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल जो सब स्टेशन होता है वहां पे आता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन से क्या होता है कि वो 11 kV में कन्वर्ट होता है। 132 kV इज कन्वर्टेड इनटू 11 kV। और वो क्या करता है, जैसे सपोज हमारा जो शहर है, कोई भी शहर में तुम लोग ट्रांसफार्मर जरूर देखे होंगे। ये सुन लो, ये सुन लो, हेलो। सो वो जो ट्रांसफार्मर है वहां पे क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग 1132 किलो वोल्ट को हम लोगों ने क्या किया, 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, जो कि मेरा सब स्टेशन में है। नाउ दिस 11 किलो वोल्ट जो मेरा शहर में जो करंट जो जाता है, मेन लाइन जो है, वो क्या करता है, बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर वी कन्वर्ट इट इन ऑलमोस्ट 220 वोल्ट। नाउ ये 220 वोल्ट मेरे घर पे आया। अब ये 220 वोल्ट को वी कैन अगेन कन्वर्ट, सपोज वी आर by using that electricity we are try to charge a mobile. So mobile को चार्ज करने के लिए तुम्हें चाहिए 6 वोल्ट। So you convert this 220 volt into 6 volt. So every time you need a transformer, you from this using the transformer, you can change from very high voltage to a very low voltage, and similarly from the low voltage to a very high voltage. Is it clear, everyone? Now, anyone please respond when I'm saying is it okay or not, because I don't know it's recorded properly or not. So on the basis of shape or on the basis of winding, how you wind it, transformer is mainly two type. So transformer is mainly two type. One is called the core type. Another one is called a shell type. So core type में क्या होता है? I just want to show you the front view of a core type. ये एक metal block होता है, ठीक है? And I think you understand what you mean by block. Block मतलब इसको जो है इधर में भी होता है, और इसका बीच में से हम लोग क्या करते हैं, पूरा मेटल को उड़ा देते हैं। मतलब ये क्या है, बीच में खाली है। So इसमें क्या किया जाता है कि one side, this one, हम लोग इसमें क्या करते हैं, वायर को वाइंडिंग करते हैं, और suppose on that basis we can put some input EMF, and on that basis we can get some output EMF. So ये मेरा voltage output है, ये मेरा voltage इनपुट है, और इस टाइप का ट्रांसफार्मर को बोला जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, you have one more type of transformer, and actually
The second one is very important. Most common used transformer is shell type transformer. सबसे ज्यादा यूज होता है इन आवर डेली लाइफ, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये क्यों सिलेबस में नहीं है? कि तुम लोगों को ट्रांसफार्मर का सिर्फ थोड़ा सा जब कंस्ट्रक्शन है कि कैसे कैसे हो रहा है, और उसके लिए तुम्हें ये लोग ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ इसका डिजाइन। सो ये देखने में ऐसा डबल विंडो टाइप का होता है, और इस डबल विंडो में जहां पे मेरा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, वहीं पे आफ्टर प्राइमरी वाइंडिंग ये लोग सेकेंडरी वाइंडिंग करता है। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, मानो प्राइमरी वाइंडिंग जो है दोनों को इधर से निकाल दिया, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है मानो दोनों को इधर से निकाल दिया। सो दिस इज माय सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज माय प्राइमरी वाइंडिंग। सो प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग को लगाया जाता है, और यही सबसे ज्यादा यूजेबल ट्रांसफार्मर है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। लेकिन ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, तुम्हारा सिलेबस में कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि इसमें समझने में काफी अच्छा होता है, क्योंकि इन वन साइड यू हैव प्राइमरी वाइंडिंग, इन अनदर साइड you have secondary winding, so it is very easy to understand. It is very easy to understand. Okay, everyone. So now सबसे पहले जो है, सबसे पहले है इसका प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन of electromagnetic induction। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, मैं तुम्हें जो पूरा ट्रांसफार्मर में हो क्या रहा है ये सब बताना की कोशिश करूंगा, ये वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मेन कंस्ट्रक्शन, whenever they ask you the transformer, you have to show this transformer, that is the core type of transformer। यही तुम्हारा सिलेबस में है, and this is my front view of the transformer। ठीक है, so suppose एक साइड में मैंने प्राइमरी वाइंडिंग लगाया, ऐसे करके मैंने वायर को वाइंड किया, टर्न लगाया। हाँ, so this is the primary winding, EMF of the primary। सिमिलरली इधर में भी एक टर्न होता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। EMF ऑफ द सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा, ये जो करंट है प्राइमरी माने इनपुट, और जो करंट मुझे मिलेगा आउटपुट में, दैट इज द करंट इन द सेकेंडरी। ये है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, ये है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, and both input and output से they are not directly connected, they are connected by that core of the metal block। इसके अंदर ये क्या करेगा, ऐसे करके कॉमन म्यूचुअल फ्लक्स जनरेट करेगा, कॉमन म्यूचुअल फ्लक्स जनरेट करेगा। और why we use AC? AC में क्या है, AC में my input voltage or input current continuously changing,
as my input voltage and current is continuously changing, that mutual flux, common mutual flux, is also changing. Common mutual flux is also changing, or according to electromagnetic induction, माने Faraday's law and Lenz's law, क्या कहा जाता है कि EMF तभी जनरेट होगा जब ये क्या करेगा कि ये फ्लक्स का चेंज को मेंटेन करेगा. Yes or no? Everyone please respond. Everyone please Yes, respond. sir. Yes, sir. So that means see, this is a very practical question. Anytime external means तुम्हारा जो वाइवा एग्जाम्स होता है उसमें ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा अगर मैं ट्रांसफार्मर में इनपुट में एसी के जगह पे डीसी सिग्नल लूं, मतलब डीसी करंट लूं, तो क्या ये ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब क्या मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा? इनपुट में तो मिल रहा है, अगर मैं इनपुट के जगह पे एसी में डीसी वोल्टेज लिया तो क्या मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा? व्हाट इज द आंसर? यस और नो? एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर? यस और नो? हेलो, एनीवन, व्हाट इज द आंसर? यस और नो? हाँ, Ananya, ball, what is the answer? Sir, no. Very Because good. the common mutual flux is not changing. Yes, very good. Because flux is generated, but mutual flux is not changing. Excellent. Mutual flux is not changing. And as the mutual flux is not changing, EMF not induced, because according to Faraday's law, EMF induced and it lasts up to we able to maintain the change, and here the mutual flux is not changing. So it's all about mutual flux. Okay, and yes, transformer is a static device and it transforms voltage, means from low to high or high to low at constant frequency. So your frequency remain constant. Yes or no? Yes, sir. আচ্ছা, তোদের আমি আপ টু এভারেজ পাওয়ার কনজাম্পশন নোট পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু এসিড. Okay, now see, so from electromagnetic induction, from electromagnetic induction, we can say EMF of the primary, that is minus number of turn primary, change in flux by dt, that phi is the common mutual flux. That phi is the common mutual flux. And EMF of the secondary, that is minus number of turns secondary, d phi by dt. So let it be equation number 1, let it be equation number 2. From equation 2 divided by equation 1, EMF of the secondary by EMF of the primary, that is minus number of turn secondary d phi by dt minus number of turn primary d phi by dt. So we can say EMF of the secondary by EMF of the primary, that is number of turn secondary by number of turn primary. Yes or no, everyone? Yes or no? Yes, sir. And here again a very important term. Number of turns secondary by number of turn primary
is called a ratio, which is represented by the symbol K or any number. And that is called the turn ratio. Turn ratio. So sometimes they can give you the turn ratio is that much. So always remember that turn ratio they given you. They don't say you primary by secondary or secondary by primary. Turn ratio is always the output number of turn by the input number of turn. That is number of turn secondary by number of turn primary. So after that, if you understand up to that, and let it be equation number 3. So now, yes. Now, for ideal transformer, although the transformer is not ideal, but if we suppose the transformer is ideal, for ideal transformer, so now you can think ideal in what sense? Ideal in sense of efficiency. That means no loss of power for ideal transformer. What do you mean by ideal transformer? No loss of power. Although in practical, in transformer, you have so many type of loss, okay, which we see in the next class, okay, and that is the next day is the next class is the last class for that chapter. That means alternating current, and then we need 2 more class for electromagnetic waves, and then we say my first book is complete. So if your first book is complete, that means you can say almost 70% syllabus is complete, not 50%. Okay. For ideal transformer, no loss of power. Efficiency is power. Sorry. For ideal transformer, no loss of power. That means efficiency is 100%. What do you mean by efficiency of 100%? That means input power and output power are equal. So power input is equals to power output. So what do you mean by power input? EMF of the primary, current in the primary. What do you mean by power output? EMF of the secondary, current in the secondary. So what we can say EMF of the secondary by EMF of the primary, that is equals to current in the primary by current in the secondary. So if the transformer is ideal, in that case we can say the EMF of the secondary by EMF of the primary, number of turns secondary by number of turn primary is equals to current in the primary by current in the secondary. I'm repeat it again, if it is ideal, but in practical it is not ideal. Are you getting my point? But in practical it is not ideal. So then that means in the question they can give you that not it is ideal, so they give you the efficiency. So that we discuss later on. But before that, now for any transformer on the basis of turn ratio, okay, on the basis of turn ratio, transformer is 2 types. Transformer is 2 types. Number one is called the step up transformer. Now what happened in this step up transformer? So in step up transformer, see what result you get and how you
explain it. They are the two different things. So in step up transformer, what happened? Your output voltage is greater than input voltage. Mane EMF of the secondary coil is greater than EMF of the primary coil. But how you make it? So for that, in step up transformer, your number of turns secondary must be greater than number of turn primary. Mane if your number of turn in the secondary is greater than the number of turn in the primary, then automatically your EMF of the secondary is greater than EMF of the primary. So what you can say, what I want is the how to increase the voltage, and for that what to do, I can change the turn. So that's why you have to write first key number of turn secondary greater than number of turn primary, and because of that your EMF of the secondary is greater than EMF of the primary. And when your EMF of the secondary is greater than EMF of the primary, automatically EMF and current, they are just reverse of each other. So I can say current in the secondary, I can say current in the secondary is less than current in the primary. That means EMF of the secondary increase, so current in the secondary decrease. Why? Because power is EMF into current. So if one is increased, automatically another one is decreased, because net power is remain same. So in case of step up transformer, your primary coil is thicker and secondary coil is thinner. So in step up transformer, primary coil thicker and secondary coil thinner. Why? Because if my current increase, so I need a thick wire. If my current decrease, so I need a thin wire. Yes or no? Yes, sir. So this is your step up transformer. Now, if we want to say the step down transformer, step down transformer. So next is step down transformer. কি হয় that? কাজই করে না। Step ঘ্যানটার মাথা। Good. Step down transformer. So what happened in step down transformer? Just the reverse thing. Number of turn secondary is less than number of turn primary. Mane voltage will decrease. That means primary voltage is higher and secondary voltage is lower. As the primary voltage is higher and secondary voltage is lower. এটা কাজ করছে না কেন? But so number of turn secondary is greater than number of turn primary. EMF of the secondary number of turn primary is greater than number of turn secondary. EMF of the secondary is less than EMF of the primary, or you can say EMF of the primary is greater than EMF of the secondary, and current in the primary, just the reverse, is less than current in the secondary. So now the EMF of the secondary decrease and current in the secondary increase. Yes or no? So now I can say
Secondary coil, secondary coil is thicker than primary coil. Now, apart from this, one more very important. Apart from this, one more very important is efficiency of the transformer. Efficiency of the transformer. Efficiency of the transformer. Efficiency of the transformer, which is represented by the symbol eta. So eta is power output by power input into 100%. So why this is important? Because sometimes what happened, your efficiency of the transformer is not 100%, it is 70% or 80%. So you have to use this formula, and then on that basis you have to calculate the things. So with respect to this, examiner can ask you 5 marks question about the transformer structure, that input and output, step up, step down, all these things examiner can ask you in the board exam. So these are very important, and obviously with this the numerical, which is very important. So let's start some numerical related to this. First I want to give you 2 numerical. So my first numerical is the key. First numerical is in a step-up transformer, the transformation ratio. Transformation ratio. Transformation ratio is 100. In a transformer, the transformation ratio is 100. The primary voltage is 200. Primary voltage is 200, and power input is 1000 watt. The number of turns in the secondary, the number of turns in primary coil is, number of turns in the primary coil is 100. Calculate number 1, number of turn in the secondary, number 2, current in the primary, number 3, voltage across the secondary, and number 4, current in the secondary. I think you understand by the symbol NS, IP, IS. You all understand now what you want to find out? Yes or no? Yes, Hello? sir. Now, one more question I want to give you. The second question is a transformer having efficiency. A transformer having efficiency 90%. A transformer having efficiency 90%. It working on 100 volt. That means my EMF of the primary is 100 volt. And 2 kilowatt power supply. That means my power input is 2 kilowatt. Okay. If the current in the secondary coil is, 5 ampere, calculate number 1, current in the primary, that is IP, and number 2 voltage across the secondary, that is IS. So I give you 4. Okay, so for the first question, see the transformation ratio is given, that is EMF of the number of turn secondary by number of turn primary is 100. Now power input, that is EMF of the primary, EMF current of the primary, which means 1000 is equals to EMF of the primary is given 200
and the current is given IP. So from that, IP is equals to 100 by 1000 by 200, that is 5 ampere. Now the number of NS by NP is 100. So number of turn secondary equals to 100 into number of turn primary. Number of turn primary is also 100. So 100 into 100, that is, yes, 10,000. Now current in the secondary. So as you know, the current in EMF of the primary, EMF of the secondary by EMF of the primary, as it is an ideal transformer, because nothing is mentioned about the efficiency. So that number of turn secondary by number of turn primary is 100. So you can say EMF of the secondary, that is 100 into EMF of the primary, that is 100 into 200, that is 20,000 volt. EMF of the secondary. Now current in the secondary, so I can use directly this one, IS primary by IS secondary. Why? Because it's an ideal transformer. So my current in the secondary, that is current in the primary by 100. So what is my current in the primary? 5 ampere. So 5 ampere by 100, that is 0.05 ampere. Yes or no? Yes, sir. So this is a very simple question, or you can say the simplest question. Now we move on to the little bit complex question, the second question. So in this question, see, EMF of the primary is given, power in the primary is given. So power input, that is 2 kilowatt, that means 200 watt, that is equals to EMF of the primary, current in the primary, which is equals to 100 into current in the primary. So current in the primary is 2000 by 100, that is 20 ampere. Now as the efficiency is 90%, we can't use directly EMF of the secondary by EMF of the primary. We can't use this one. If we use this one, we get the wrong answer. Okay, so this is the wrong method. EMF of the secondary by EMF of the primary, you can write directly. You can't do that because it's a wrong process now. As the efficiency is given 90% money 0.9, that is power output by power input. So my power output is 0.9 into power input, that is a 0.9 into input power is 2000, that is 1800 watt. Now as you now know the power output, that is EMF of the secondary, current in the secondary is 1800 watt, and current in the secondary is given. So EMF of the secondary is 1800 by current in the secondary, that is the 5 ampere. So that is 360 volt. Yes or no, everyone? Yes, sir. Now the next question, which is a very important question, and two questions are actually given in the NCERT book. That is the last two questions from this chapter, and these two are the lovely conceptual question. So I'm first want to read the question. A बहुत बड़ा question है, but a lovely question is there. Okay, so first I'm trying to read the question, and then on that basis we can solve it. A small town with a demand of 800 kilowatt. So you have a small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt. At 220 volt. Okay. Is situated 15 kilometers away from an electric plant generating power at 440 volt, which is situated at a distance of 15 kilometers from the small town. An electric plant is there. Electric plant. Okay, and why I put this gap, I explain you later on. Plant generating power at 440 volt.
This is my the voltage, input voltage of the electric plant. The resistance of the two lines wire carrying power is 0.5 ohm per kilometer. So देखो करंट गया आया, सो टोटल वायर कितना का लेंथ कितना हो गया 30 किलोमीटर है ना. The town get power from the lines through a 4,230 volt. 4,230 volt. देखो the most important part is how you represent a transformer. Transformer is represented by the symbolic representation of a transformer is like this. Okay, and here how you understand the step up and step down. Step down, that means the secondary turn is less than the primary. So here see the input voltage is 4,000 and output voltage is 230 volt. That means here it is a step down transformer. Step down, and the primary turn is greater than the secondary turn. So you can understand why I put this gap. So this is my step down transformer, 4,000 volt step down to 230 volt. Why we maintain 230 volt? Because we need the voltage is 220. So if you maintain a little bit more than that, it will be better, because कुछ जो voltage है loss होता है during the transformation, क्योंकि wire का कुछ resistance होता है, जब current जाता है तो current into resistance is voltage. अब देखो इसमें क्या बोला है, step down transformer at a substation in the town. Estimate the, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक substation है. Substation मतलब तुम लोग देखा ही होगा, जैसे कोई बड़ा बड़ा फ्लैट होता है या बड़ा बड़ा मोहल्ला होता है, तो वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा देता है. वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है. वैसे ही यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है सब स्टेशन पे, जो कि छोटा सा टाउन है, तो एक ही सब स्टेशन से काम चल रहा है. 4,000 को वो 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है. स्टेप डाउन एट द सबस्टेशन इन द टाइम. एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट. सो क्या क्या तुम्हें निकालना है. नंबर 1 तुम्हें निकालना है, नंबर 1 एस्टिमेट लाइन पावर लॉस. लाइन पावर लॉस. नंबर 2 क्या निकालना है. नंबर 2 निकालना है हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई assuming that there is negligible power loss due to leakage. So power supply by the plant. Power supply by the plant. ये निकालना है. डिमांड कितना है 800 किलोवाट का, तो प्लांट कितना सप्लाई करेगा पावर कि उसको स्मॉल टाउन को 800 किलोवाट का जो डिमांड है वो फुलफिल हो. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज दैट कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट. यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा. स्टेप अप क्यों, 440 को मुझे ज्यादा वोल्ट करना है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है मुझे 4,000 वोल्ट मेंटेन करना है. सो आई नीड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और स्टेप अप का दिखाने का तरीका क्या है, इनपुट में मेरा कम टर्न होगा, आउटपुट में मेरा ज्यादा टर्न होगा. तो ये मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. ये मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कैरेक्टराइज करना है. मतलब इनपुट में तो मेरा 440 वोल्ट होगा, आउटपुट में कितना वोल्ट है ये मुझे लिखना पड़ेगा. कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन द टाउन. और नंबर 4 जो है ये और भी इंपॉर्टेंट है. रिपीट द अबव न्यूमेरिकल विथ 40,000. पहला वाला में क्या था, 4,000 है देखो इनपुट में. सेकंड में सेम क्वेश्चन को रिपीट करो, मतलब ये 1 2 3 फिर से निकालो. ठीक है. जब मेरा 4,000 के जगह पे 40,000 अगर वोल्ट
230 वोल्ट का मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाऊं और इसके बाद एक्सप्लेन करो, मतलब जब भी तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कि एक्सप्लेन व्हाई द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रेफरेबल। देखो 4000 के रेस्पेक्ट में 40,000 10 गुना ज्यादा है, तो हम वोल्टेज को जितना ज्यादा रखेंगे वो मेरे लिए उतना प्रेफरेबल है। व्हाई दिस इज प्रेफरेबल, सो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो 1 2 3 ये एक क्वेश्चन था, और ये रिपीट वाला ये एक और क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में लगातार लास्ट का 2 क्वेश्चन है, मोस्टली 30 31। सो दिस मैंने दोनों को एक साथ कर दिया है। सो इट्स अ लवली क्वेश्चन एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि ट्रांसफार्मर का क्या जरूरत है, हाई वोल्टेज क्यों प्रेफरेबल है। हाँ, ये सब मुझे पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ लवली क्वेश्चन। और बहुत बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 2 पार्ट करके दे दिया है, किसी को पहला 3 निकालने के लिए दिया और करके दूसरा सेट में बाकी 3 कर दिया है, किसी में 4000 वोल्ट दे दिया, किसी में 40,000 वोल्ट दे दिया, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सो इट्स अ लवली क्वेश्चन, सो वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सो सबसे पहले देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बार डेटा सब देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले जो है मेरे पास 15 किलोमीटर का एक वायर है, गया 15 आया किलोमीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ द वायर 30 किलोमीटर। सो रेजिस्टेंस, लाइन रेजिस्टेंस, सो लाइन रेजिस्टेंस, लाइन रेजिस्टेंस क्या हो गया, 30 इंटू 0.5 किलो ओम पर किलोमीटर, मतलब 0.5। तो मेरा कुल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 15 ओम। ये सब नो। Yes, sir. So when you get the line resistance, next मेरा ये जो मैंने एरो दिया है, इसमें करंट कितना होगा। और ये जो है गया है, मतलब वायर गया है, वायर आया है, इसको लाइन वायर बोला जाता है। सो मैंने सेकेंड टर्म में लिखेगा लाइन करंट, है ना। सो लाइन करंट, लाइन करंट, लाइन करंट मतलब जो करंट गया। तो देखो यहाँ पे जो मेरा मेंटेन है, यहाँ पे जो मेंटेन है कितना, 4000। फिर ये स्टेप डाउन हुआ है, तो मेरा ये जो वायर में जो करंट आएगा ये इस वोल्टेज के कारण, और मेरा डिमांड कितना है यहाँ पे 800 किलोवाट। सो लाइन करंट का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इन द सबस्टेशन दैट इज 800 किलोवाट बाई वोल्टेज कितना है 4000। सो ये कितना हो गया 200 एम्पियर, मेरा हो गया लाइन करंट। जब मुझे लाइन करंट मिल गया, ठीक है, जब मुझे लाइन करंट मिल गया, अब मैं निकाल सकता हूं कि देखो क्या है, जब मेरे पास ऐसे करके एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, करंट है 200 एम्पियर, तो इसमें वोल्टेज कितना गया वो मैं निकाल सकता हूं। तो लाइन वोल्टेज ड्रॉप, लाइन वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है 200 एंड रेजिस्टेंस कितना है 15, तो ये कितना हो गया 3000 वोल्ट। अब तुम खुद ही बोलो, तुम खुद ही समझ लो बात को, कि मानो मेरे पास एक यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको मुझे वोल्टेज देना है। सपोज यहाँ पे मुझे 4000 वोल्टेज चाहिए मेंटेन करने के लिए, और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, सो इसका करंट है 20 एम्पियर या 200 एम्पियर, सो इसका वोल्टेज है 3000 वोल्ट। सो मुझे कितना वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4000 वोल्ट मेंटेन होगा। हाँ, एनीवन प्लीज टेल मी। हेलो अनन्या, बोल। आयनदीप, आरत्रिका, तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो। अच्छा, एनीवन रेस्पॉन्ड। अमन, एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा सुनो, मानो ये है 1000 रुपया, ये 1000 रुपया तुम्हें मुझे भेजना है सपोज,
और मानो तुम कोरियर के थ्रू से भेज रहे हो, तो कोरियर वाला बोल रहा है मेरा चार्ज है 100 रुपया, तो तुम्हारा कितना पैसा खर्चा होगा मुझे 1000 रुपया भेजने के लिए? 1100। तो ये पैसा सबको समझ में आता है, लेकिन वोल्टेज में बोल रहा है तो सब चुप होता है। यहाँ पे 1000 वोल्टेज 1000 रुपया लग रहा है और 100 रुपया सर्विस चार्ज है या वेस्टेज है, मतलब अमन का 100 रुपया वेस्ट हुआ मुझे 1000 रुपया मिलने के कारण, है ना। सो सिमिलरली क्या हुआ कि ये जो 4000 वोल्टेज चाहिए और इसके लिए 3000 वोल्टेज का लॉस हो रहा है ना ड्यू टू द लाइन वोल्टेज, ये सब नो। सो मुझे सप्लाई कितना वोल्टेज करना पड़ेगा? 7000। 7000। सो ये जो लिखा है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मेरा इनपुट तो 4440 है, यहाँ पे 4000 मेंटेन हो तो मुझे यहाँ पे 7000 वोल्टेज ये करना पड़ेगा, ये सब नो। समझ में आया? Yes, sir. सो मैं इसको पहले लिखता हूं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप transformer in the plant, in the yes electric plant, वो क्या हो जाएगा 440 वोल्ट को हम क्या करेंगे, हम लोग 7000 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको स्लैश लगा के भी लिख सकते हो। अच्छा ये तो चला गया। अब मेरे पास क्योंकि रेजिस्टेंस वायर में है तो इसके लिए मेरा लाइन पावर लॉस कितना हुआ, लॉस ही हो रहा ना, ये तो कहीं पे जल नहीं रहा ना, ये वायर के कारण, वायर से जाने के कारण लॉस हो रहा है। सो लाइन पावर लॉस, लाइन पावर लॉस क्या है? देखो लाइन पावर लॉस में क्या होगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर कितना है 200 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 15, तो ये कितना हो गया 600 किलोवाट। देखो तुम लोग बात को समझो, देखो आज से 20 साल 25 साल पहले, ठीक है, ये सब ये गूगल जो हम लोग पेमेंट करते हैं या नेट बैंकिंग से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आज से 20 साल 30 साल पहले ये नहीं था। तो आज से 30 साल पहले अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना होता था, मुझे मानो दिल्ली में किसी को इमीडिएट पैसा भेजना है, तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट तरीका था और ओनली वन तरीका था वो था मनी ऑर्डर। एंड बिलीव मी इन दैट टाइम, क्योंकि मनी ऑर्डर बहुत फास्ट प्रोसेस है, 1000 रुपया मनी ऑर्डर करने के लिए लगभग 100 रुपया लगता था। तो वो भी क्या, मैंने आज यहाँ से मानो दिल्ली में मुझे भेजना है तो मैं पहले पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन लगाऊंगा, 1 से 1.5 घंटा मेरा लाइन में टाइम जाएगा, क्योंकि उस समय ज्यादा कोई ऑल्टरनेट नहीं था, तो बहुत बड़ा लाइन होता था। फिर वहां पे एक तो पोस्ट कार्ड जैसा देता था, उसमें यू कैन राइट ऑल्सो कि नमस्ते पिताजी, 1000 रुपया आपको इस मंथ के लिए भेज रहा हूँ, हाँ मिलने के बाद जरूर चिट्ठी लिख के सूचित कीजिएगा बोल के मैंने लिखा, और फिर उसको 1000 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा किया विथ एड्रेस, और इसके लिए वो मुझसे 1100 रुपया लिया, और वो शॉर्टेस्ट मतलब 2 दिन के अंदर वो मुझे मेरे घर पे आके, पोस्टमैन आके मेरे घर पे नॉक करके वो चिट्ठी देगा और 1000 रुपया देगा। सो पहला बात है मुझे 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा, दूसरा बात है 2 दिन बाद जाके 1000 रुपया मिला और उसके लिए 100 रुपया खर्चा हुआ। आज के डेट में किसी को 10,000 रुपया का जरूरत है, विद इन 10 सेकेंड तुम मनी ट्रांसफर कर सकते हो, और शायद 10,000 का अगर मनी ट्रांसफर करोगे बैंक वगैरह के थ्रू से, तो तुम्हें शायद 5 रुपया लगभग लगेगा। और कुछ गूगल ऐप वगैरह है, ये लोग क्या करता है कि लोगों को पैसा जो रहता है गूगल अकाउंट में, वॉलेट में, उसके लिए भी उन लोगों को पैसा मिलता है, मतलब वो भी तो एक तरह का स्टोरी हुआ, तो वो कोई चार्ज ही नहीं करता, उल्टा वो तुम्हें 5 रुपया एक्स्ट्रा देगा कि ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर करते हो 5 रुपया 10 रुपया उल्टा तुम्हें वो देगा, और उससे भी वो कमाता है।
और ये कमा के वो करोड़पति है, इतना कमाता है। जैसे अमेज़न देखो, एक सिंपल डिलीवरी बॉय है, मतलब एक सामान को मेरे से लेके तुमको भेज रहा है, वो अभी वर्ल्ड का सबसे अमीर पैसा वाला है। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो है इंसान का सोच, कि ये जो प्रॉब्लम्स था कि साला 1000 रुपया भेजने के लिए 100 रुपया चला जा रहा था, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हो गया बाय द डिजिटल। यू अंडरस्टैंड? यस और नो? सो आवर मेन एम कि लॉस को, बीच में जो आदमी जो खाता है उसको मिनिमाइज करें। यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो बीच का जो है वो मिनिमाइज हो एंड सिक्योर भी हो। ठीक है, मेरे अकाउंट से डायरेक्ट चला गया, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। साला मनी ऑर्डर भेजा पोस्टमैन को, पोस्टमैन बीच में से जा रहा है, 2 ठो लड़का आया, चाकू दिखाया, पैसा निकाल लिया। सो दैट इज नॉट सिक्योर प्रोसेस। हाँ, बेचारा का तुम्हारा सैलरी से वो 1000 रुपया कट जाएगा, क्योंकि वो जब वहां से निकाला तो दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए गवर्नमेंट उसको पैसा दे रहा है। सो इट्स अ, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो लॉस कितना हुआ, 600 किलोवाट। 800 किलोवाट चाहिए, 600 किलोवाट लॉस, मतलब बहुत ही घटिया ट्रांसमिशन है। ठीक है, बहुत ही घटिया ट्रांसमिशन है। सो अगर मेरा लॉस इतना है तो हाउ मच पावर सप्लाई बाय द प्लांट? सो पावर सप्लाई बाय द प्लांट कितना होगा? पावर सप्लाई बाय द प्लांट कितना होगा कि जो मेरा लॉस हुआ प्लस जो मेरा डिमांड है। सो दैट इज 8 8 16 14 1400 किलोवाट, ये मेरा पावर सप्लाई बाय द प्लांट। सो मेरा एफिशिएंसी क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया पावर आउटपुट 800 किलोवाट, सप्लाई कितना है 1400 किलोवाट इंटू 100%। तो जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा ये आएगा 57.2%। याद रखना, इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 90% से नीचे अगर एफिशिएंसी होता है तो वो बहुत ही घटिया ट्रांसमिशन है। और ऐसा अगर ट्रांसमिशन कंटिन्यू होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को सब कुछ बेच के घर चला जाना पड़ेगा, मतलब सब कुछ बेच देना पड़ेगा। बोलेगा हमसे भैया नहीं होगा, हाँ या तो पैसा बढ़ाओ, हाँ यूनिट का वैल्यू बढ़ाओ, नहीं तो हम छोड़ के जा रहे हैं, मेरा लुटिया डूब गया है, तो आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। तो उसके बाद से सब अंधेरा में रहो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। ये मैंने निकाल लिया 600 किलोवाट। पावर सप्लाई बाय द प्लांट 1400 किलोवाट, कैरेक्टराइज भी हो गया है, और हमने एफिशिएंसी भी निकाल लिया है। अब बोला है रिपीट द क्वेश्चन विथ 40,000 किलोवाट। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन को 40,000 किलोवाट के साथ रिपीट करता हूं तो क्या होता, देखते हैं अभी। तो देखो अब मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट करने जा रहा हूं 40,000 किलोवाट के साथ। तो मेरा रेजिस्टेंस वगैरह सेम है, मैं यहाँ पे दूसरा इंक से लिख रहा हूँ। यहाँ से लाइन करंट अब मेरा क्या हो जाएगा, 8000 मेरा डिमांड, 800 किलोवाट का डिमांड था, पर वोल्टेज अब मेरा हो गया 40,000 है ना, तो ये क्या हो गया 20 एम्पियर। ये सब नो। So if we use the Yes, sir. 40,000 volt, my line current is 20 ampere. So if my line current is 20 ampere, my line voltage loss is 20 into 15, that is 300 volt. मेरा इनपुट कितना, यहाँ पे कितना था 40,000, तो और तो क्या प्लस 300, तो मेरा जो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो कैसा होगा 440 से लेके 40,300। Yes or no? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, लेकिन इसको साथ साथ करने से तुम लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसके बाद अब है, सो ये क्या हो गया 20, करंट मेरा 20 एम्पियर है, 20 का स्क्वायर इंटू 15, ये हो गया 6 किलोवाट। सो मेरा पावर सप्लाई बाय द प्लांट कितना हो गया 6 किलोवाट प्लस 800 किलोवाट, दैट इज 806 किलोवाट।
देखो कहाँ 600 कहाँ 6 है ना। सो तो मेरा एफिशिएंसी क्या हो गया, मेरा एफिशिएंसी हो गया है कि 800 किलोवाट बाई 806 into 100%, दैट इज ऑलमोस्ट कितना आया है 99.2%। 90% से ऊपर काफी अच्छा ट्रांसमिशन कहलाता है, एंड यहाँ पे तो 99% है। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि ये 15 किलोमीटर मतलब बहुत ही छोटा जगह में हो रहा है ना। So that's why we can say कि from this we can get an idea कि why high voltage transmission is preferable। क्यों? क्योंकि high voltage transmission में मेरा करंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है, और जहां करंट का वैल्यू बहुत ही कम होगा सो मेरा लॉस काफी कम होगा, है ना, पावर लॉस बहुत ही कम होगा। That's why high voltage is preferable। and high voltage इतना ज्यादा preferable है कि हम लोग जो हमारा जो देखना बड़ा बड़ा जो रास्ता में टावर्स वगैरह होता है, ऐसे करके बड़ा बड़ा नदी के ऊपर से टावर्स वगैरह जाता है, तो इसमें जो होता है 132 केवी माने 1,32,000 वोल्ट। और अगर तुम्हें चेक करना है ताकि मैं 1 मिनट द्वारा मैं कॉल बैक करूँ तुम्हें, तो अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है कि वायर में कितना करंट वोल्टेज है, तो वहां पे खड़ा हो गया इसमें देखना ऐसे ऐसे ना चक्ति होता है, तो इस चक्ति को काउंट करना कितना सारा चक्ति है। ईच चक्ति इज 11 किलो वोल्ट। जितना सारा चक्ति है काउंट करना, उतना ऐड करना, उतना किलो वोल्ट तुम्हारा ये ट्रांसमिशन लाइन है। अब इतना ज्यादा क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये जो है एक पूरा शहर या एक शहर से दूसरा शहर, इवन कभी कभी एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट को कनेक्ट करता है हाई ट्रांसमिशन लाइन। सो ये एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट को करंट कम्युनिकेट करता है, मतलब ये 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसे दूर दूर से जाता है। तो इसीलिए हाई वोल्टेज होने से उसमें करंट बहुत ही कम होता है, तो उसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है। That's why high voltage is always preferable. Everyone understand? Yes, sir. So I am pausing the recording. Next class में इसका losses है, और losses में भी बहुत कुछ important है, जैसे एडी करंट लॉस, मैंने तुम लोगों को एडी करंट भी नहीं बताया है। हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटिज्म में है, जो मैग्नेट तुम्हारा मैग्नेटिज्म में ये टॉपिक हिस्टेरिसिस हटा दिया है, तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस भी समझना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है, वो है एलसी ऑसिलेटर। मोस्टली वो भी तुम्हारा सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी जरूरत है करना, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका ट्रांसफार्मर का लॉसेस एंड एलसी ऑसिलेटर पढ़ेंगे। एक क्लास लगभग लग ही जाएगा, दोनों को मिला के 1-1.5 घंटा, फिर हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। फिर मुझे मैक्सिमम 2 क्लास चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, फिर हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट बुक कंप्लीट। तुम लोगों को PA1 का जो सिलेबस है वो हो जाएगा, फिर हम लोग ऑप्टिक शुरू करेंगे। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।